Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about subtractions 1 to 9. Okay, so let's start with that. Subtractions is taking away the objects. Subtractions का मतलब होता है कुछ चीजें उसमें से निकालना. We use the symbol minus for subtractions. और जो subtractions का साइन होता है वो होता है minus. For subtractions, we should take away the objects from the given group of objects. For example, from 5 birds on a tree, 2 birds flew away. Were left 3 birds. Okay, so here it is given 5 minus 2 is equal to 3. We write 5 minus 2 is equal to 3. We say 5 minus 2 is equal to 3. Now from 6 apples take away or cross out 3 apples. Count the apples left over which are 3. So how many apples are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then cross out 3 from them. Okay, 1 cut, 2 cut and 3 cut. So now from 6 take away 3. We write 6 minus 3 is equal to 3. Okay, so we say 6 minus 3 is equal to 3 like that. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं. Okay, I hope you understood the concept of subtractions. Now testing time 4.1. Cross out, count and write. Okay बेटा, अब हमने क्या करना है, पहले इसको काउंट करना है, फिर क्रॉस आउट करने हैं जितने हमने उसमें से निकालने हैं. So here it is given 1, 2, 3, 4. 4. Then cross out 1 from them. If you just cross out, then put the sign like that. Then now how many remain? 1, 2, 3. Yes, clearly here 3 is remain. Similarly, from 4 take away 1. Okay. Now from 7 take away 3. अब ये कितने हैं? 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 में से now in this time you have to cut 3 from them. Okay. So 1 cut, 2 cut and 3 cut. तो कितने रह गए? 1, 2, 3 and 4. So हमारे रह गए 4. Okay. So this is very easy activity. Rest you have to solve it by your own beta. Okay. So now move on next one. Cross out, count and subtract. So how many objects are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 it is already given. So cut out 2. So अगर 2 cut करा तो कितने रह गए हमारे? 3. Okay. So now next 1, 2, 3 and 4. So this is 4 and you have to cut from 3. So now 1 cut, 2 cut and 3 cut. So how many remain? Yes, only 1. So write it 1 over here like that. Similarly, कितने objects हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In this time you have to cut 4 from them. So 1 cut, 2 cut, 3 cut and 4 cut. So how many remain? 1 and 2. Yes. So this is very easy. You just count and subtract. Okay. So I hope you understood. So these are the other example. You have to fill it by your own beta. Okay. So now move on next one. Subtractions on number line. अब subtractions तो करेंगे but number line की help से करेंगे. Subtractions on a number strips or number line by using skip counting method. For example, subtract 3 from 5. Method number 1. Count 5 from start. We reach at 5. Now count 3 from 5 in opposite directions like left side. We reach at 2. Okay. तो start से लेकर हमें पहले 5 में जाना है like that. यहाँ पर हम 0 से लेकर 5 में गए. 5 में पहुंचने के बाद हमें 3 लेफ्ट साइड जाना है. So 1, 2, 3. So 5 minus 3 we just reach on number 2 like that. Okay. So this is very easy method. So subtract on number line. Subtract 5 from 9. Okay. So same method. Start from 0 to 9. Then 9 पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? उसमें से 5 subtract करने हैं. So 1.
count 9 on right hand side from start or directly reach at 9. Okay, आप 0 से करो या directly आप 9 पे पहुंच जाओ. Now count 5 on left hand side from 9 we reach at 4. So 9 minus 4 is equal to 4. Okay, so this is very easy. With this we learnt how to subtract with number line. Okay, so now testing time 4.2. Subtract on number line 6 minus 3. Okay, so start. आपको 0 से लेकर कहाँ पर पहुँचना है? पहले 6 पर. हम यहाँ पर 6 में पहुँच गए. Now you have to subtract 3. So हमने क्या करना है? इसमें से 3 steps आगे लेने हैं. So 1, 2, 3. So we will reach on now 3. So this is very easy. Okay, so सेम 7 आप 7 पर पहुंचेंगे, देन 5 आप लेफ्ट साइड पे पहुंचेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. ओके बेटा, सो दीज आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ दैट वन. यू हैव टू फिल इट बाय योर ओन. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन, सब्सट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन. सो सेम, जस्ट गो टू 5 फर्स्ट लाइक दिस एंड कट इट, बैक इट फ्रॉम 2 लाइक दिस. 1, 2 आप यहाँ तक चले गए, देन योर आंसर इज 3. सिमिलरली 4 पे जाएंगे आप. हम 4 पे चले गए. 4 में से आपने 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, तो 1 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे. तो हम कहाँ पर पहुँचे? 3 नंबर पर. सो राइट इट 3 वेरी नाइसली ओवर हेयर. ओके, so these the other example, you have to fill it by your own. Okay, then 3. Okay, so now we count backward or move to the left on the number line to subtract number. Okay, so इसी तरीके से हम left side में जाकर और backward counting करके subtractions करते हैं. So बेटा, I hope you understood the concept of that one. Okay, so now move on next one, subtractions by counting back. Now we learn subtractions by counting backward on fingers. Okay, for example, subtract 3 from 8. 8 में से 3 को कैसे subtract करते हैं? Fingers के through. Just keep 8 in your mind. अपने mind में आप 8 नंबर रखिए and open 3 fingers like that. 3 fingers को आप open कीजिए. Also count back from 8 as 7, then 6, then 5. V reaches at 5. So 8 minus 3 is equal to 5 or 8, 3 minus 5. Okay, you can just do it like that or like that also. Okay, I hope you understood. So now move on next one. Testing time 4.3. Subtract by back counting back. So 2 minus 1. So 2 minus 1 is 1. क्योंकि 2 के बैक्स में 1 ही तो होता है. सिमिलरली 4 में से 2 करेंगे. सो 4 से पहले 3, 3 से पहले 2. सो हेयर इट इज 2. सिमिलरली 7 minus 3, you can just 7 on your brain and just count backward. Okay, 7 से पहले 6, then 5, then 4. Yes, so write it 4 over here. So this is very easy. These are the other example of that one beta. You have to fill it by your own. Okay, so now move on next topic, which is vertical subtractions column method. Okay, so let's start with that. We can subtract the numbers by putting them vertically or in column and using backward counting on your fingers also. Okay, for example, subtract 3 from 7. 7 में से 3 को कैसे माइनस करेंगे? ओके, सो इन्होंने क्या करा? 7 से पहले 6, 6 से पहले 5 एंड 5 से पहले 4 लाइक दिस. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. जस्ट डू प्रैक्टिस. नाउ सब्सट्रैक्ट 7 minus 4. 7 में से 4 करोगे माइनस, बैकवर्ड काउंटिंग करके करोगे, देन यू विल रीच ऑन 3. ओके, सिमिलरली 5 में से 3 काउंटिंग आप बैक साइड करोगे, देन यू विल रीच ऑन 2. सेम 8 में से 4 गए, 4. ओके, so these are other example. You have to fill it by your own beta. Okay, so now class activity. Select any 5 student, out of them left 2 student, go outside. Now number of remaining leftover students, have a practice like that. अब आप इसी तरीके से 5 students लो, 2 उसमें से हटा दो. So these are the class activity. You have to done it by your own beta. Okay, so now move on next one,
which is testing time 4.4. Subtractions, words, problem or story sums. Okay, so first one is given, there were 6 parrots on a tree. पेड़ पे 6 parrots हैं. 3 parrots flew away. 3 तो उड़ गए उसमें से. How many parrots were left on the tree? अब कितने बचे? 6 में से अगर आप 3 को subtract कर दोगे, so clearly here it is 3. So now 3 parrots are left on the tree. Okay. Similarly, second example है हमारा, there were 5 pups. 5 pups हैं यहाँ पर. 2 pups ran away. 2 उसमें से भाग गए हैं हमारे. How many pups were left? तो कितने बचे वहाँ पर? So write it 5 here very nicely. 5 में से 2 भाग गए हैं. तो भाग गए इन द सेंस कि वो उसमें से निकल चुके हैं. सो 5 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे तो कितने बचे? क्लियरली 3. सो राइट इट हेयर 3 लाइक दैट. ओके, सो दीज आर द अदर एग्जाम्पल बेटा. जस्ट डू प्रैक्टिस. ओके, so with this we ended the chapter. I hope you understood the whole concept of subtractions. So just do practice and do rest of these exercise by your own.